Hello and welcome back to my channel Explore with Faheem. I hope you are fine to the point 99. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे. आई होप दैट यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस. तो पिछले वीडियो में मैंने एक्चुअली आपको बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आई होप यू अंडरस्टूड इट कम्प्लीटली. तो चलिए इसके बाद मैं शुरू करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट tense has got immense significance in tenses because all the people, all the students and learners, they commit errors in this particular tense. Present perfect tense की जो हिंदी साउंड है पहले उसको समझते हैं कि अगर हिंदी में ये सारी साउंड्स आएंगी तो मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँ, वो जा चुका है, राहुल चला गया है, मैं आपसे मिल चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं ये मूवी देख चुका हूँ, वो लोग जा चुके हैं, उसने खाना पका लिया है, मैं सारा काम कर चुका हूँ. तो ये सारी जो साउंड आप नोट कर रहे हैं, दिस ऑल बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यही सब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर कवर किया जाता है. So in English, if I have to cover the sound, that is the work which has been done, which you have done, the task which has been completed, that is covered in this tense, which is present perfect tense. तो चलिए इसको समझने के लिए इसका रूल समझते हैं. रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट. पॉजिटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है पॉजिटिव सेंटेंसेस आते हैं. सो द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट पॉजिटिव सेंटेंसेस एज सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. यस, अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी आनी चाहिए. हमेशा मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप वर्ब को याद कीजिए, वर्ब को अच्छे से रिवाइज करिए, बिकॉज वर्ब इज़ यूज्ड एट सो मेनी प्लेसेस. हेयर स्पेशली अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद नहीं होगी तो आप ये सेंटेंस बोल ही नहीं सकते. तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो याद होनी इस टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी जनता, काफ़ी लोग स्ट्रगल इसीलिए करते हैं, वो माइंड में ये सोच रहे होते हैं कि इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो क्या होगी. वो गलती से कभी कभी रोड बोल देते हैं, कभी कभी वो एट बोल देते हैं. बट यू शुड स्पीक ईटन, ड्रिवन, गॉन, ऑल दीज आर थर्ड फॉर्म्स. तो आपको थर्ड फॉर्म अच्छे से याद होगी. आई एम श्योर यू विल नॉट commit any foolish error. So as I was telling you, the rule is subject plus has or have plus third form of verb plus object if there is any object. So this is the rule. And the example, he has gone, वो जा चुका है. I have done my work, मैं अपना काम कर चुका हूँ. She has cooked food, वो खाना बना चुकी है या उसने खाना बना लिया है. They have played cricket, वो क्रिकेट खेल चुके हैं. I think I have met you somewhere earlier. So ये सारी एग्जाम्पल्स हैं. अब यहाँ पर मैंने एक एक्सरसाइज भी दी है, ये एक्सरसाइज आप ट्राई कर सकते हैं एंड that will definitely boost confidence in you that you completely know present perfect tense. तो अब इसके बाद डिस्कस करते हैं present perfect के नेगेटिव सेंटेंसेस. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हैज़ और हैव को कैसे यूज़ करते हैं. ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे हैज़ कहाँ पर यूज़ करना है और हैव कहाँ पर यूज़ करना है. स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स उसके अंदर भी एरर्स कमिट करते हैं. वो गलती से हैज़ की जगह पर हैव ले लेते हैं और हैव की जगह पर हैज़ ले लेते हैं. इन प्लेस ऑफ हैज़ दे टेक हैव, इन प्लेस ऑफ हैव दे यूज़ हैज़. सो यू शुड completely know how to use has and have. So he, she, it सिंगुलर इनके साथ हैज़ का यूज़ करते हैं. आई, वी, यू, दे प्लूरल इनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं. सो इसको आप अगर याद करेंगे सो दिस विल बिकम ईजी फॉर यू. ही, शी, इट सिंगुलर इनके साथ मुझे हैज़ लेना है. आई, वी, यू, दे प्लूरल इनके साथ मुझे हैव लेना है. वेरी सिंपल. सो आई वॉज टेलिंग यू नेगेटिव सेंटेंसेस. सो द रूल इज़ subject plus hasn't or haven't plus third form of verb plus object if there is any object. For example, I haven't done my work, they haven't gone yet, Rahul hasn't driven car, I haven't tasted
this chocolate yet. So these are the examples and यहाँ पर एक exercise है, इस exercise को आप try कर सकते हैं and see. I hope you can do all the sentences. तो चलिए इसके बाद आते हैं interrogative sentences. Interrogative sentence में ही जैसा कि मैं हमेशा जोर देता हूँ, हमेशा emphasize करता हूँ, ज़्यादातर लोग mistakes करते हैं. तो interrogative sentence को कैसे हम बोलेंगे? Very simple. Have you done your work? Has she gone? Have you submitted your project file? Have you checked your homework? So these are the examples of present perfect tense. And the rule is WH plus has have plus third form of verb plus object if there is any object plus question mark. For example, why has he done this? Who has done this? Why have you come here? Who has touched my laptop without my permission? Who has taken my phone? Why have you done this to me? Who has eaten my chocolate without my permission? So these are the examples of interrogative sentences. यानी कि आप question कैसे करेंगे present perfect tense में. Mind you guys, if you don't know the interrogative sentence of any tense, किसी भी tense का अगर आपको interrogative sentence नहीं आता है तो आप question कर ही नहीं सकते. You cannot proceed further with your communication to any person. If you don't know how to form interrogative sentences, then only you'll be able to ask what you are willing inside. If you don't know how to proceed with the communication through your questions, then only you'll be able to gain the command. Then only you'll be able to ask your willing sentences which you are thinking. So interrogative sentences are very important. Mind you, take it seriously please. And after this, the last part, negative interrogative sentences of same tense. तो negative interrogative sentence कैसे cover करते हैं present perfect tense के? For example, why haven't you returned my pen? Why haven't you done your work till now? Why are you so lazy? Why haven't you done this assignment? So all these are examples of negative interrogative sentences. In negative interrogative sentences, the rule is WH family plus hasn't, haven't plus noun pronoun plus third form of verb. For example, why haven't you done your work? Hasn't he gone to Mumbai? Haven't they gone yet? Why hasn't she returned my phone? So all these are examples of negative interrogative sentences. Tense is same, present perfect tense. And this is the exercise. Exercise आप try करें और उसके बाद देखेंगे आप इसमें से कितने sentences कर सकते हैं. If there is any doubt or any question, please feel free to ask me. So guys, this is how we do present perfect tense. ये tense बहुत important है seriously, and please go through this tense. I hope you must have covered all your doubts after watching this video, and this is very important. And here I would like to add that if you want to order our books, as you know, I have written 3 books, interactive books based on English grammar and communication, so you can order any of the books. So I have written basic level of grammar, intermediate and advanced level. बुक्स ऑर्डर करने के लिए आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको क्लिक करना है एंड यू विल बी गाइडेड हाउ यू हैव टू डू द पेमेंट. द प्राइस ऑफ द बुक्स इज़ वेरी इकोनॉमिकल, यू कैन ईजिली अफोर्ड दैट. और आप चाहें तो एक बुक ऑर्डर कर सकते हैं और यू कैन ऑर्डर ऑल द 3 बुक्स. इफ़ यू ऑर्डर 3 बुक्स यू विल बी गेटिंग गुड डिस्काउंट ऑल्सो. Here I would like to add one more additional thing that guys, everybody wants to grow their channel, and if you think that I am doing good work and in the right direction, want to request you, if you want to support my channel, the link is in the description how you can support my channel, and you can donate any amount so that this educational channel can grow. Thank you very much for your support. सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई सीरियसली नीड मोर सब्सक्राइबर्स. प्लीज़ शेयर इट विद दोज हु नीड to improve their English. Please share it with those who are willing to improve their English, and please take care of yourself. I hope you are taking care of yourselves. Thank you very much for watching this video once again. See you soon in the next video. Please take care.